Hi everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to do for passive voice for future tense. Let's see here. Passive voice for future tense और फिर part 1 of 3 indefinite है. Number one kind of sentences for simple sentences. This is our method, and I told you in my previous classes also that without this method, doing the translation, doing tenses in active voice or passive voice, that is useless. लिहाजा come on, ये है हमारे पास. फिर से बताता चलूँ कि ये पैसिव वॉइस है फॉर फ्यूचर टेंस के लिए, और पार्ट 1 और 3 है इंडेफिनिट फॉर सिंपल सेंटेंसेस. मेथड है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? मफूल जिस पर काम किया जाए, ऑन विच एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. उसके बाद विल आते हैं. विल या शेल आता है, और शेल आता है आई वी के लिए. बाकी सब जो सब्जेक्ट होते हैं डूअर्स होते हैं, और जिसमें ही शी इट सिंगल नाउन और यू दे और प्लूरल नाउन, उनके लिए विल आता है. और फिर उसके बाद बी आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर फुल स्टॉप. तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला जाएगा. ट्रांसलेट करते हैं इसे. फीफा वर्ल्ड कप. You know why I'm writing this in capital inside the sentence? Because these are called proper nouns. So, FIFA World Cup will be played in Qatar. FIFA World Cup will be played in Qatar. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इस नज़म का तर्जमा किया जाएगा. दिस poem will be translated. This poem will be translated. पैसिवाइज कर रहे हैं. फिर आप देख लीजिए, मत भूलिएगा फ्यूचर टेंस के लिए. इससे पहले हमने प्रेजेंट के लिए पैसिव किए, फिर पास्ट के लिए किए हैं, और अब हम लास्ट में फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. तो उनको हवाई अड्डे पर खुशामदीद कहा जाएगा. दे will be welcomed at the airport. They will be welcomed at the airport. I hope you understand. If you have some question, you can ask me, and I hope you subscribe my channel. Thank you.